everyone. As I had promised you guys last week, okay, प्रति नौटारे ओडिशा geography रो करिवा now मोर MCQ सेशन तम मान देखिथियो बहुत डिटेल रे जाए बट आजी एते डिटेल को जीवानी बस क्वेश्चन टा को एक्सप्लेन करबी सो दैट तमे जानिबो जे हां कोठी केमती भूल हबो जदी तमरो केमती भूल हला एंड केमती आंसर करबो से क्वेश्चन राइट तो से जिनसडा मु बुझे देन बाकी तो आमे ऑलमोस्ट 10टा पाखापाखि क्लास लगी आमर टू कंप्लीट द ओडिशा जियोग्राफी सेक्शन तो से गुराक जो तुम भल से क्लियर है से टॉपिक टा गो बैक एंड वॉच दोस वीडियोस वंस अगेन एंड देन एमसीक्यू सब अटेम्प्ट करिया को पुन थरे आसीजो ठीक अछि तो विदाउट एनी फर्दर डिले shall we start? Let's wait a few more minutes, let more people join. Okay, then हम start करिया ता भितरे जो माने अच्छो लाइव if you have any doubts then ask, otherwise we'll start. I'll wait for 30 more seconds. Start. ठीक अछि okay, let's start. So, before we go into the MCQ, as always मनु दरकार अछि updates, regular updates class रो and PDF दरकार अछि. You can join these channels which KXIS रो and more personal channel and यदि काहाकू किछि geography related or any other subject related preparation doubt पछे you can contact me at okay so you can contact me here, this is my number. Okay, so start now. First question on the screen: which of the following districts of Odisha does the Indian Standard Time Meridian pass through? Indian Standard Time Meridian IST meridian रोचे हमरो सेटा को डिस्ट्रिक्ट थ्रू रे पास करूची पुरी, बरगढ़, नुआपड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी. So you have to choose from the given options. The options are here. Try to answer. Okay. Mona Lisa, you are new to the class. The first time for geography, I think live. Panchanan is C. Okay. One is going with C, one is going with D. So let's see what should be the answer. Mona Lisa is also saying D. Okay. Now, हमारा Indian Standard Time Meridian the 82.5 degree or 82 degrees 5 minutes east meridian, right? This is the IST meridian. So एटा हमरो total 4
डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा रे पास करछि कोन से चारटा को नवरंगपुर महापड़ा कोरापुट एंड मालकानगिरी okay so these are the four districts through which the Indian Standard Time Meridian passes through okay so हमारा ऑप्शन से कौन कौन छी नुआपड़ा अछि yes this is correct पूरी नहीं बरगढ़ नहीं कोरापुट correct मालकानगिरी correct so our answer here will be option C okay okay welcome Monalisa first class tomorrow hopefully you will be a continuing presence in the classes now so as we discussed our answer kona option C Mapra Nabrangpur Koraput Malkangiri these are the four districts through which the IST passes now next question kona Odisha has 6 districts with coastline which are Balesur, Puri, Kendrapada, Jagatsinghpur, Ganjam and Bhadrak. So these are the 6 districts which have a coastline. We have to arrange the order of the length of the coastline. Who district ro coastline सबठु अधिक अछि and कोडार कम अछि. So accordingly you have to arrange it in the decreasing order of the length of the coastline. So try to answer this. Everyone is saying B. तो मु तम मानु को कौन कहबी मना केमती कर परिबी सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके डॉट ओके so हमरो as it is mentioned 6 districts have the coastline के coastline रो लेंथ के कहि परिबो चैट रे लिखि दियो लेंथ केते अछि केते किलोमीटर ओके the length of coastline of Odisha now order कोन रहबो as all of you have mentioned first होची होची हाईएस्ट लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ठीक अछि पुरी परे हमें देखिबा कार अछि बालेश्वर देन केंद्रापड़ा देन जगतसिंहपुर पुरी एठी मेंशन पुरी होची 1 बालेश्वर जगतसिंहपुर होची केंद्रापड़ा होची 4 देन हमर होची गंजाम 5 एंड फाइनली भद्रक होची 6 ओके दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा 574 very good Pranati earlier it was 480 kilometers but recently after new survey it has increased to 574 kilometers ठीक अछि now चलो next question को जिबा next question consider the following statements with reference to the coastal plains of Odisha ठीक अछि ओडिसा रा coastal plains विषय रे हम क्वेश्चन पचारछि कोन the coastal plains are a form of erosional landform. It is called as the hexadeltaic region as it is formed by the deltas of 6 major rivers in the state. The northern boundary is set by river Rushikulya while the southern boundary is set by Subarnarekha basin. Which of the statements is or are incorrect? So you have to choose the right option here. Okay.
जल्दी जल्दी आंसर को। ऑप्शन सी, the coastal plains are a form of erosional landform. No, it is not erosional, it is depositional. Okay, these are deltas. So delta कौन गोटे, delta होची गोटे depositional landform. So एटा को हमें erosional कहले भूल हबो. So it is a depositional landform. Then it is called as the hexadeltaic region. So this is correct here. Okay. To be very technically, actually 6टा delta नुह, 5टा delta गोटे estuary. But for all use and purpose हमें सेटा को hexadeltaic कहूचे कारण नाटा भल सुबुची. Hexadeltaic plus estuarine सेमती तो भल लागिवनी. Pentadeltaic plus estuarine सेमती तो भल लागिवनी. तो सेति पई hexadeltaic region बोली कहू. Then the northern boundary is set by river Rushikulya while the southern boundary is set by Suvarnarekha. This is the opposite. Northern boundary is the Subarnarekha basin and Rushikulya is the southern boundary. ठीक अछि. हमरो केमति रहउछि Subarnarekha, Budhabalanga, Poitarani, Brahmani, Mahanadi and then Rushikulya. These are the 6 rivers that we are talking about. Very good, Mona Lisa. Very good. So let's move ahead. Chalo. Next question. Consider the following statements with reference to the middle mountainous regions of Odisha. Odisha middle mountainous regions upar pacharchi. It covers about half of the total area of the state. The middle mountainous regions are divided into 5 regions. So, which of the given statements is or are incorrect? So, answer ko. Option B. Okay. Anyone else? Okay, everyone is saying B. So, this is the correct answer. It covers about half. No, it is not half, it is 75%. Sabbu jinsa ame padhiche, right? Then, yes, it is divided into 5 regions. Kono kono thila? Amara Similipala and Meghasani mountains, Mankadanacha and Molayagiri, watershed between Mahanadi and Baitarani, common interflow of Mahanadi, Vansadhara and Rushikulya. Then last thila amara Putangi and Chandragiri hills, right? So these are the 5 regions जोराका हमें देखितले. Detail रे ता विषय सब पढ़ी छे. So next question को जिबा. Arrange the following in west to east direction. West ru east को जिबो. कौन रहिला? Hirakud, Bengali, Ansupa, Chilika. These are water bodies, right? So choose the correct option. West to east order केमिति रहिबो.
Option A. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, A. Everyone is saying A, but A is the wrong answer. Okay. If you see it like कौन हबो हमरो गोटे एमिति ही देखि दबो जदी गोटे जेनेरिक ओवरव्यू नहीं, then you will think that this is the correct order, but the correct order is actually Hirakud, then we have Bengali, then we have Chilika, and then finally we have Ansupa. Okay, so this is the actual correct order. ठीक अछि, जोटा कि हमर अंशुपाटा स्लाइटली वेरी स्लाइटली तमे जदी मैप देखिवो चिलिकाटा एमती थिवो अंशुपाटा एमती थिवो, ठीक अछि। देखियो जदी चिलिका रो टिके ईस्ट को रहउछि, सेटा बहुत ही कम ईस्ट को एट देखिवो, देखो हिराकुद ऑब्वियसली, देन वी हैव रिंगाली, तापर देखो रिंगाली रु एटु तळु गोटे स्ट्रेट लाइन टाणो, हियर वी हैव चिलिका, चिलिका रु देन तमे जदी गोटे स्ट्रेट लाइन टाणिवो एई चिलिका रो जस्ट ईस्ट को हम देखिया पाउछे एठी कोन ना अंशुपा लेक, ठीक अछि। तो तमे डिस्ट्रिक्ट वाइज भाबिलो चिलिका इज एट द कोस्ट लाइन, तो चिलिका ही हेथिवो, बट द कोस्ट लाइन इज स्लैंटेड लाइक दिस, राइट, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक अछि। ऑल क्लियर हियर, एमते ट्रिक क्वेश्चंस तमाने दिस इज लाइक डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जोटा तुमको एग्जाम रे आसीबो, ठीक अछि। तो एइडा पई हमें ऑलरेडी प्रिपेयर हेकी थिबा एई भलिया क्वेश्चंस पई, ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, which of the following is not a physiographic division of Odisha? Very simple question, संगे संगे आंसर करो, coastal plains, middle mountainous region, sub Himalayan belt, rolling uplands, एथरे आई मीन एटारे जदि भूल करिवो देन पाठ पढ़ा छाड़ दियो प्लीज, तमनकु बेइज्जत करी कहूनी, बट दिस इज फैक्ट, तमन जदि ए जिंसटा भूल करिवो यू शुड सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन छाड़ दियो। करेक्ट आंसर दे समझते ऑप्शन सी, ओके। ओके, now let's move to the next question। देखो प्रीवियस क्वेश्चन टा कोन थला जोटा डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन रहबो, दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट, एमिति क्वेश्चन भी ओपीएससी रे आसी पारे, ठीक अछि। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन, which of the following rivers originates outside Odisha? Okay, Varnarekha, Baitarani, Budhabalango, Indravati. This is also a easy level question, very easy no, but easy. Try to answer. Well done everyone. So last 10टा class रो फायदा मिलुची ताले तमनंगु, most of the questions you are answering correctly, well done। चलो आड़ी चलो आगु, प्रणति, okay, anyone else? Panchanan is also option A, so yes, correct answer। Varnarekha origin कोठी ना नागरी विलेज, राइट, को रीजन रो आछी छोटा नागपुर प्लाटू, ठीक अछि। चलो ओके, कमेंट रे लिखो, आमे एटा डिस्कस करछे प्रस्तुति रो लास्ट वीक रो ज्योग्राफी क्लास रे,
छोटा नागपुर प्लाटू रो तीनटा का सेक्शन रो ना को हमते consider the following statements regarding the Mahanadi river. Okay, it originates from the Chota Nagpur plateau in Chhattisgarh. It enters Odisha near Padigaon in Jharsuguda district. Its largest tributary is river Ib. It forms a bird's foot delta near the Bay of Bengal. Which of these statements are correct? So only one correct, only two, sorry, how many, not which. Only one correct, only three correct, only four correct. तब माने कौन कहबो केतेटा करेक्ट अछि एंड कोडा कोडा सेटा मते दरकार आंसर रे को Shashikant is saying B. Welcome Shashikant. I think this is your first class as well. Okay, option B. The two are correct. Okay, anyone else? Pranati is going with option A. You have one vote for A, one vote for B. Two correct. Mona Lisa is saying. Okay. You mean two correct meaning only one statement is correct, the second statement. Seda to? Panchanan is going with 2 and 3 correct. So Panchan is going for B. Dita yela. Mona Lisa? Statement 2 is correct only. Yes, Pranati. Got it? Okay. So काय हे जाइची. So आमे casting vote पकेवा. Casting vote का presiding officer, that is me. So casting vote is going for only one correct. Okay. It originates from CNP. Completely wrong. Amarkantak Hills, right? Or rather Sihawa, right? Sihawa mountain near the Amarkantak Hills. This is incorrect. Chalo. Next, it enters Odisha near Padigaon, Jharsuguda district. This is correct. Its largest river is river Ib. No, this is not river Ib. The largest is river Tel. Okay. Tel river tauchi largest tributary. It forms a bird's foot delta. No, the delta it forms is arcuate delta. Okay, so this also is incorrect. So our answer is option A. Sabu kiछि ame discuss kariche. Okay. Well done, Mona Lisa and Pranati. Chalo, let's move ahead. Next, match the following type वाला question गोटे आनिछि. देखिबा कोन अछि. महानदी रिवर दिछि हमर माउथ कोठी अछि. महानदी ब्राह्मणी बुढ़ाबळंग वंशधारा बैतरणी. माउथ गुराक अछि कोठी साउथ ऑफ भितरकनिका, फॉल्स पॉइंट, कलिंगपट्टनम, चांदीपुर, नॉर्थ ऑफ भितरकनिका. तो को मैच करियो 1 रो कोटा रहइबो, 2 रो कोटा रहइबो. मैच करिकी करेक्ट ऑप्शन चूज करियो. ठीक अछि. It's okay, Panjanan, no need to say sorry. हुए सेमती भूल हुए ए सेशन गुराकर पर्पज से या यू डोंट हैव टू से सॉरी. तमे अटेम्प्ट करूचो जदी आई एम वेरी हैप्पी. जो माने अटेम्प्ट करनांदी दे शुड से सॉरी बिकॉज़ से ट्राई करनांदी. ट्राई कोन कोनदी सेटा को कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक अछि. सो बी प्राउड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को. Okay, Pranati as Shashikant is going with C. Let's see option C. 1 ra B. Mahanadi false point. Very good. This is correct. So Mahanadi false point la हम पाखे दीटा रोची गोटा option B option C. तापरे ब्राह्मणी रा चेक कर देले हमको जणा पड़ जियो.
ऑप्शन बी हम कि सी हम ब्राह्मणी रो वी हैव ब्राह्मणी कोठी पड़ुची साउथ ऑफ भितरकनिका बैतरणी पड़ुची नॉर्थ सो ब्राह्मणी विल बी ए बैतरणी विल बी ई ओके सो हियर वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुड़ाबलंग कोठी पड़ुची हमर चांदीपुर पाखरे बंशधारा पड़ुची कलिंगपट्टनम पाखरे इन आंध्र ओके so well done option C is the correct answer very good चलो next question को जीवा next question consider the following statements with reference to weather of Odisha okay weather विषय पे हमें बढ़िया से discuss करते हैं ना according to Köppen's classification most of the state falls into tropical savanna type of climate Odisha experiences hot and humid summers mild and dry winters rainfall is evenly distributed throughout the years we have to choose the correct option 1 and 2 only 2 3 1 3 all go this is conceptual question तुमको जाना थिवा दरकार क्लाइमेट ऊपर हमें बहुत बढ़िया से डिस्कस करथले सेदिन A Pooja is saying only 1 and 2 welcome Pooja another new member hey pranam sir this is first class on geography channel welcome pranam chalo so have option A everyone is going with option A so तमन समस्त कहूच तो मेजॉरिटी विन्स आ मु कम भूल कहि तो अकॉर्डिंग टू कोएपेन्स क्लासिफिकेशन कोएपेन के थिले सबले मु ए जो यूनिक फैक्ट टा कुए कोन ना हमर जो अल्फ्रेड वेगनर थिले एटा समस्त जानथियो जो माने मोर क्लास करी आछो एटा न कहिले मते भल लागेनी अल्फ्रेड वेगनर कर फादर इन लॉ सुनो ससुर जी ठीक अछि सुनो ससुर जी गीत गाई की अल्फ्रेड वेगनर निजर थ्योरी देथिले कोएपेन निजर थ्योरी तांका आगु दे ठीक अछि चलो so statement 1 is correct according to Köppen's classification which is the easiest type of classification हमारो ओडिशा कोथरे पड़े tropical savanna type of climate रे पड़े ओडिशा experiences hot and humid type of summers yes summer रे as we are witnessing is hot plus we see a good amount of rainfall whereas in winter it is mild हमारा टेम्परेचर 18 रूट 22 भितर एमती रुहे ओके एंड इट इज ड्राई बहुत ही कम अमाउंट रो रेनफॉल हुए एंड रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एटू ही जणा पड़ जाय हमकु गोटे ह्यूमिड रहला गोटे ड्राई रहला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड केमती सो दिस इज इनकरेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चलो आगु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मॉनसून इन ओडिशा The southwest monsoon begins to make its presence felt in Odisha around the early June with the arrival of Bay of Bengal branch of southwest monsoon. Odisha doesn't experience any rainfall from northeast monsoon. Which of the statements is or are correct? So choose the correct answer. Yes, Pranati knows. सबुठु अधिक क्लास करचंदी A is going with option B and everyone else is going with option A.
So the answer is actually option A. Pooja, you made a slight mistake. October November रे north east monsoon experience करे. Well done Monalisa. The answer is it experiences northeast rainfall but बहुत कम quantity रे. The quantity is very less. मैं एबे just last question रे कहली बहुत कम quantity रे rainfall witness करे. Dry माने नुहे जे जमा rainfall होनी. Very less northeast monsoon rainfall करे. Doesn't experience any rainfall. This is wrong. ठीक है जी. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट अछि, स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि. हमर बे ऑफ बंगाल ब्रांच रु ही वर्षा हुए जोडा हमर अर्ली जून रे आसी की ओडिसा रे पहुंच थाए. ठीक अछि. तो ऑप्शन 1 only one, that is option A is correct. Okay, chalo next question. Consider the following statements with reference to rainfall in Odisha. The coastal area of Odisha receives moderate rainfall. The central part of Odisha, including areas like Mahanadi River Basin, witness heavy rainfall. The western part of Odisha, comprising areas near Chhattisgarh border, generally receive lower rainfall compared to the coastal and central areas. वो आंसर कौन होगा? retreating. Okay, early June. Okay, हमें this early later part is very relative. ठीक अछि. तमे 15 पूर्वरु कहि परिबो this is early June, 15 ପରେ कहि परिबो later June. ठीक अछि. But yes, you are technically correct. Mid June रे ही आस्ता है. से second week, third week बेलकु ही आस्ता है. So question of framing could have been better, but for the purpose of this, early June is fine. It is not incorrect, but it could have been more correct. ठीक अछि. Option C, 1 and 3. Anyone else? Okay, I think both second and third are correct. Okay, everyone is going with C. Pranati is saying 2 and 3. Okay, so see, the answer here is option C. Okay, now coastal area receives moderate rainfall. Yes, but it is not very high, not very less, moderate ruhe. Because of the influence of proximity to the ocean and ता सहित Bay of Bengal rainfall से सब मिसिकी coastal area रे moderate rainfall हुए. The central part of Odisha, including areas like Mahanadi River Basin, witness heavy rainfall. This is incorrect. It is calm rainfall. ठीक है जी. Central part of Odisha is comparatively drier. It is in the rain shadow region. ठीक है जी. And western part of Odisha, comprising near Chhattisgarh border, this receives even lesser rainfall. So this is also correct. Receives lower rainfall. Sorry, जिनसो होची इठी महानदी बेसिन रे heavy नुह, not less. It is moderate as well. Okay, मु less कहि देली भूल रे. It is moderate rainfall. ठीक अछि. See, entire coastal plain रे heavy highest rainfall हुएन. ठीक अछि. Coastal plain, entire coastal plain is not the highest amount of rainfall. किछिटा सोर्स रे तमे सेटा पाइबो, बट एग्जैक्ट ये रे हमें देखिबा जदी हमारा जो सदर्न पार्ट ऑफ ओडिसा रहउची, सदर्न कोस्टल प्लेन्स रीजन टा रहउची, प्लस द कोरापुट मालकानगिरी से रीजन टा रहउची, सेठी हमें देखिया पाउचे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक अछि. हाईएस्ट टा सेठी रहउची. बाकी कोस्टल एरिया टा मॉडरेट रे ही जीवो कंपेयर टू दैट. किछिटा सोर्स रे तमे देखिया पाइबो जे लेखा आइची कोस्टल रीजन रे हाईएस्ट रेनफॉल रहउची, but that is not exactly true. ठीक अछि. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1 and 3. ओके, चलो
नेक्स्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements with reference to cyclones in Odisha. Okay, approximately one third of the east coast cyclones originating in Bay of Bengal and adjacent region affect Odisha. Major cyclones predominantly occur in December and January. Which of the statements are correct? So answer को ये प्रणति सेटा तमे भूल कलो सेकंड हबनी करेक्ट ठीक अछि प्लेन तो हाईएस्ट नॉट okay only one Pooja is going with only one okay everyone is going A well done answer is correct हमरा one third approximately one third of the east coast cyclones जोरा को Bay of Bengal रे होची सेरा को ओडिसा को आसुची predominantly occurs in December and January no this is in October and May period okay April May ठीक अछि not even April May April okay चलो next question को जीवा the western disturbances have no effect on climate of Odisha okay reference to climate of Odisha ठीक अछि western disturbances have no effect on the climate of Odisha El Nino results in decreased agricultural productivity La Nina results in normal rainfall in the state कोडा करेक्ट हबो को is going 1-3 correct पचारछि right anyone else Pranati A 1-3 sure but C E and C तादरे चलो करेक्ट स्टेटमेंट कोन कोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कोठी कोठी हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमर कोठी हुए राइट तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करे तो रीजन ओके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को अफेक्ट करे पंजाब हरियाणा से रीजन को अफेक्ट करे ठीक अछि तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट 1 is correct then El Nino results in decreased agricultural productivity yes normal रहइबो जेतबेले El Nino La Nina नथिबो El Nino हेले good rain El Nino हेले normal रे good हेले El Nino रे bad rainfall okay and La Nina हेले too much rainfall so both case रे it is bad for the entire country of India तो obviously ओडिसा पई भी खराब होबो ठीक अछि no effect ना it does not have any effect on Odisha climate of Odisha not India ओडिशा ऊपर किसी इंपैक्ट पकाएनी ठीक अछि तमे सेमती भाबन जे नो रहिछि माने सब बेले भूल हो स्टेटमेंट ठीक अछि यदि सेमिति भाबी कि सेटा को आंसर दोछ देन दैट इज रॉन्ग किछटा जगह रे थिबो ऑल थिबो सेटा भी ठीक हबो ठीक अछि ओके फॉर एग्जांपल गुड स्टेटमेंट कहली एल निनो affects the entirety of India
सेटा तो ठीक हबो ना एक्सट्रीम वर्ड यूज होची एंटायर इंडिया बट सेठी केमदी ठीक होची ओके तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रो किछि इफेक्ट न थाए ओके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज लिमिटेड टू वेस्टर्न यूपी उत्तराखंड पंजाब हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर रीजन रे भी हुए एंड राजस्थान रो नॉर्दर्न पार्ट रे टिके हुए ओके नो सर ऑल ओवर भाबी की कहली इंक्लूडिंग ओडिशा ना 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 इंक्लूडिंग ओडिशा हुए ठीक अछि नाउ लानिना इट इज बैड फॉर रेनफॉल बिकॉज बहुत अधिक हुए तो दिस इज आल्सो बैड एटी कोन हबो फ्लड हे जिवो ओके एंड एटी कोन हे जिवो ड्रॉट हे जिवो एल निनो रे तो एल निनो डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काहे कि ना बैड रेनफॉल हुए तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट आवर आंसर विल बी ऑप्शन नो नो ऑप्शन बी भूल भूल सॉरी आंसर विल बी ऑप्शन ए ओके चलो आगु को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements with reference to soils of Odisha. The predominant type is found in laterite soil. Laterite soil is not at all suitable for agriculture and even soil management can't help grow crops. Find the correct statement. Go. Pranati is going with D. Mona Lisa going with D. Neither is correct. Okay. So, anyone else? Option D. Option C. A. Anyone? Okay. Consensus is option D. Very good. So, the predominant type is red soil. कि कहबो लैटराइट सॉइल रो रैंक केते मु एटा क्लास रे कहि लैटराइट सॉइल रो रैंक केते ओडिसा रे एटा को नंबर सॉइल रहइबो रेड सॉइल परे हमें देखुचे रेड देन रेड एंड येलो देन वी सी ब्लैक तापरे वी सी रेड सॉइल सॉरी नॉट रेड laterite soil then we see laterite okay so tara rank kete 4 so this statement is incorrect laterite soil is not at all suitable एटा तो पूरा भूल हेजो इट इज सुइटेबल बट जिंस होची कोन ना हमकू टिके नाकू या धरे कोन कमी क थाए एन ई एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस एटा कम थाए ठीक अछि तो दिस इज द आमे एथरे कोन करिया एनपी बेस्ड फर्टिलाइजर पके दवा एंड ह्यूमस पई हमरो मैन्योर यूज कर दवा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो हे जीवो काम हे जीवो तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ओके चलो आगु जीवा consider the following statements with reference to mineral resources of Odisha कौन Odisha is the sole producer of chromite in India Odisha is the largest bauxite producing state in India तो करेक्ट ऑप्शन चूज करियर अछि वो कॉफी ए सब हुए लैटराइट सॉइल रे रबर वेरी गुड पूजा वेरी गुड हमारा कैश क्रॉप्स बहुत हुए ये सॉइल रे लैटराइट सॉइल रे because it gets well drained C okay well done कोन मु कोन दरकार ता मानू समस्त मु तो जना पड़ गला आ एमसीक्यू डिस्कशन रे मु तो मानू कोन दरकार ओडिशा is the sole producer of chromite in India with 96% of the reserves ठीक अछि ओडिशा रे
इंडिया रो 96% रिजर्व मिले एंड लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट आल्सो करेक्ट 55% ऑफ द रिजर्व्स इज देयर ओके चलो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कोन मिनरल देछि मेजर एरिया कोठी मिलुची बॉक्साइट कोल क्रोमाइट आयरन ओर वी हैव तालचेर सुकिंदा पंचपटमाली एंड बड़बिल को मैच द फॉलोइंग करो ऑप्शन प्रोड्यूस परसेंट बॉक्साइट वेरी गुड पूजा एक्जेक्टली प्रोड्यूसिंग अमाउंट इज डिफरेंट मु जो 96 आ 55 कहली सेटा रिजर्व तमानंगु मु क्लास रे होमवर्क भी देथिली सेटा तमन निजे करियो बोली पंचानन इज गोइंग विथ सी पूजा इज ए शशिकांत ए ओके most of you are going with option A let's see what's the correct answer bauxite bauxite रा सबुठो अधिक कोठी मिले हमकु सुकिंदा रे मिलियो ठीक अछि कोल कोल होची तालचेर तो ए तो देखिया जदी हमकु किछि मैच करियो छी 1B 2A 1B एडी आंसर हे गला सॉरी हां बॉक्साइट होची सी कोल होची ए क्रोमाइट होची सुकी सॉरी माय बैड आयरन और होची बड़बिल कैरी डी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सॉरी फॉर दैट ठीक है फंबल कर दिली सीजीएल एग्जाम रे आस्थिला ए कोठी मिले रु दीटा क्वेश्चन सी सही जिंस तमे जदी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सहित निजर फैक्चुअल डेटा इंफॉर्मेशन को भी क्लैरिफाई करिवो जोटा कि हमें करूचे क्लास रे सेटा रे तमे नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज अदर एग्जाम भी दे परिवो ठीक अछि तो को एग्जाम रे कोडा अधिक आसु सेटा तमको खोजिया पड़िवो ठीक अछि सेटा तम ऊपर तम काम सीजीएल वगैरह पई तमको पढ़ाई परिबेनी तो सेटा रे तमको बेसी फैक्ट घोसिया पड़िवो pentlandite okay often mentioned in mining geology is associated with which ore copper manganese nickel bauxite एटा मु कहितली क्लास रे को यस शशिकांत सेटा मु भूल कर देली मैच करियर भूल कर गोटे स्लिप ऑफ टंग ओके हुए सेमती क्लास भितर सेमती बेले बेले हे जाय ठीक अछि प्रणति ओके शशिकांत इज गोइंग सी वेरी गुड मन रखि छ ताले क्लास रे कोन पढि छ हमें ऑप्शन सी निकेल और निकेल को कोनती पेंटलैंडाइट ओके चलो आगु जीवा then okay this is very interesting type UPSC style question एटा ठीक अछि OPSC रे आसी पारे that is why I have kept this as one type UPSC रे type रो questions आसे ठीक अछि now this type of forest needs 200 to 250 centimeter rainfall and temperature range of 24 to 27 degrees Celsius important tree species include arjun mango mankada kendu rai champa manda etc the top story trees are deciduous while the second story trees are evergreen this story ro spelling bhul so which type of forest is described in the passage tropical evergreen tropical semi evergreen tropical moist tidal mangrove forest kuda habo very good the bauxite ro aluminum bauxite ro aluminum no tame jodi कहया चाहछ aluminum रो ore होची bauxite copper रो होची chalcopyrite tropical semi okay so this tropical semi evergreen that is the correct answer semi evergreen रे हमें दीटा को देखिया पाउचे deciduous trees देखिया पाउचे evergreen trees भी देखिया पाउचे ठीक अछि एत पई सेटा को हमें कहूचे semi evergreen ठीक अछि evergreen रे तो सब किछि evergreen trees हेता
Okay, chalo. Next question and the last question of the day. Consider the following statements about tidal mangrove forests of Odisha. These are also called as Hentala Vana, as Hentala grass grows here abundantly. The trees in this kind of forest have xerophytic adaptation. Which of the statements given is or are correct? Whoa. Both are correct. Good morning. Okay, Somit, good morning. Good morning, good morning. Chalo. Class सरला बेलू को आसो और ठीक अछि किछ नहीं recorded देखि दबो या कोथी typing होल recorded पूजा both are correct everyone is going with both are correct अरे भाइयो भौणी माने हिरोफाइटिक हबो ना हालोफाइटिक हबो कौन हबो सांग माने हैं फसी गल तो फसी गल फसी गल ना नहीं एठी हालोफाइटिक हबो जीरोफाइटिक नो दिस इज इनकरेक्ट ओनली वन इज करेक्ट ठीक अछि सर क्लास केतेटारू केतेटा होची ओके शशिकांत सी हमरो दीटा बैच होची YouTube रे गोटे इवनिंग रे ऑलवेज 9 PM रे आइदर ज्योग्राफी हबो नहले पॉलिटी नहले हिस्ट्री रहउची ठीक अछि ए तीनटा का टॉपिक ट्वाइस अ वीक राती 9टा बेले रहउची डेली मंडे टू सैटरडे नॉट डेली मंडे टू सैटरडे रहउची देन मॉर्निंग 10 PM रे सॉरी मॉर्निंग 10 AM 10 PM आज बहुत भूलभाल करछे मु मॉर्निंग 10 AM रे हमरो प्रस्तुति बैच चलची ठीक अछि प्रस्तुति बैच जो थरे हमें डेली 25 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डिस्कस करूचे फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट हमारा शेड्यूल अछि समथिंग लाइक दिस मंडे रहउची इकोनॉमिक्स देन ज्योग्राफी इटार फिक्स शेड्यूल रहउची देन आई थिंक वी हैव पॉलिटी देन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक रहउची डिपेंड एवरी अदर वीक अल्टरनेट होउची सेटा देन वी हैव हिस्ट्री एंड देन फाइनली ऑन सैटरडे वी हैव सीसैट ठीक अछि I am taking CSAT and geography. बाकी economy and environment नौचंती अनन्या मैम ओके पॉलिटी पवित्र सर नौचंती हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक सत्य सर नौचंती ठीक अछि तो अरे जॉइन देम अकॉर्डिंगली ठीक अछि ओके पूजा नो वरीज आज फर्स्ट टाइम पे देखलो यस सौमित xerophytic is in arid regions okay thank you so much GST GST कौन टैक्स लगे तो क्लास ऊपर okay चलो so with this we are done with today's discussion and शशिकांत I hope तमे शेड्यूल जानि गलो सब गोटे काम करिवो मु स्टार्टिंग रु दीटा का चैनल रो QR देथिली जाके चैनल जॉइन कर दियो ठीक अछि दीटा का चैनल जॉइन कर दियो तुमको डेली अपडेट्स मिल जिवो ठीक अछि आउ कार किछि क्वेश्चंस अछि और शैल वी वाइंड अप द क्लास नाउ okay welcome good night everyone so let's end the class here we'll meet in the actually kali sakalu hi hame dekha haba geography class ठीक अछि चलो गुड नाइट